Hey everyone, I know you, you know me. Let's not waste any time and get into the important topics जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. So Unit 1 Digital Documentation. So from this chapter you need to understand what styles are. इसका definition आपको आना चाहिए and the types of styles जैसे character styles, paragraph styles. Positioning of image में आपका alignment, arrangement, text wrapping वो आपको आना चाहिए. Templates, the definition how to implement templates, आप कहाँ से templates बना सकते हो. टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है वो आपको पता करना पड़ेगा. मेल मर्ज, द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेटा सोर्स एंड व्हाट इज द मेन डॉक्यूमेंट, ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. सो नाउ दीज थिंग्स कंसोलिडेशन, सब टोटल, व्हाट इफ, सॉल्वर एंड गोल सीक सबका डेफिनेशन आपको आने चाहिए. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वर एंड गोल सीक. हाइपरलिंक्स आर ऑफ टू टाइप्स, आपको पता होना चाहिए, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. Macros, why are they used and how are they used. Database management system में से concept of keys, primary key, foreign key, composite primary key, the definitions you need to know. SQL queries, 4 marks का question आता है इनमें से. You need to understand what are the various type of queries. हम लोगों ने इसकी practice भी की है. Relationships are of 3 types, one to one, one to many and many to many. रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाई इज इट यूज्ड. देयर आर 2 पॉइंट्स टू बी नोटेड हियर and I think you need to refer to the DBMS PDF for the same. Unit 4 Web Applications and Security. Even though it's very easy, you need to remember a couple of topics. Accessibility options. What are the types of disabilities and कौन से accessibility options उनके लिए use होते हैं. Network and its types. So यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा LAN, WAN क्या होता है, the definitions, what is the area that covers. Architecture is of 2 types, peer to peer and client server architecture, you need to remember. Types, there are about 6 types जिसमें से 3 wireless and 3 wired types of networks होते हैं. And what is the definition of phishing and spoofing and how can you secure your computer. ओके सो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कर लोगे देन मोस्टली आपका 80% ऑफ द सिलेबस विल बी कंप्लीट एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम दीज चैप्टर्स. ऑल राइट, सो फ्रॉम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं एंड इवन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इनका, 4 मार्क्स ईच का. यू हैव एन ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी 3. एंड डेटाबेस मैनेजमेंट में से डेफिनेटली 1 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम योर SQL queries. So अगर आपने SQL queries कर लिया, आपके 4 marks sure है. And if you know the terms or definitions from web applications and security and digital documentation, then you will be able to score 4 marks each. So let's not waste any time. If you know my name, then well and good. If you do not, my name is Aakash Singh. I am here to make things easier for you. And at any point of time, if you feel that you have a doubt for your examination, you can connect with me on Instagram. My handle is Aakash7.7 or you can also comment under any of my videos. So let's start with digital documentation. What is the utility of text wrapping in a document? Text wrapping क्या होता है आपको definition आनी चाहिए. So it refers to the relation of graphics with relation to the surrounding text. So for example, आपके पास बहुत सारा text है in your Word document and you need to position an image according to this text. So हो सकता है आपका जो text है left hand side में हो सकता है आपका जो text है वो right hand side में हो. Maybe it is flowing through either side. So you need to know the definitions of these. So this is the utility of text wrapping. आप टेम्पलेट के बारे में एज वी डिस्कस, व्हाट इज अ टेम्पलेट. इट इज़ अ ब्लूप्रिंट और द मेन डॉक्यूमेंट जिससे आप बाकी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो. द 2 ways ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पलेट आर, आप डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, लाइक दिस, नेम इट document 1. यू कैन सेव दिस एज अ टेम्पलेट एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हो आप ये डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो. और फ्रॉम द विजर्ड you have multiple options of choosing from resume, maybe invitation, maybe something else, mailer or a poster. So there are 2 ways. Document से बना सकते हो और wizard से बना सकते हो. As we discussed, different types of styles you need to know.
हर एक स्टाइल का क्या डेफिनेशन है एंड कहाँ पर वो यूज़ होता है इन अ वर्ड प्रोसेसर। पैराग्राफ स्टाइल्स में आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट आता है, लाइन स्पेसिंग, बेसिकली इन दो लाइंस के बीच में आपका कितना स्पेस रहेगा। कैरेक्टर स्टाइल्स में विल योर टेक्स्ट बी बोल्ड और इट विल बी नॉर्मल या फिर इटैलिक हो सकता है। सेल स्टाइल्स जनरली रेफर्स टू व्हेन यू हैव टेबल्स इनसाइड योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो सेल का, सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सेल का जो बॉर्डर है वो थिक या थिन कर सकते हो। ग्राफिक स्टाइल्स रिलेट्स टू द ग्राफिक्स दैट यू ऐड। आपने अगर कोई ड्राइंग ऐड की है या फिर आपने कोई इमेज ऐड की है तो आप उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, उसका शैडो बढ़ा सकते हो या फिर उसको क्रॉप कर सकते हो। वो सब चीज़ें ग्राफिक स्टाइल्स में आती हैं। ई स्प्रेडशीट में यू नीड टू रिमेंबर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कब काम करना बंद करता है? जब आपका जो टारगेट है वो आप मूव कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ absolute hyperlink which refers to this file. Now this file is present on the desktop. If I cut this file and paste it to downloads, तो आपका जो absolute hyperlink है वो काम करना बंद कर देगा। Whereas a relative hyperlink like this refers to कि आपका relative hyperlink यहाँ पर है and you have a file 1 and they both are in the same main folder. Let's call it folder A. Now folder A can be on desktop, it can be in the downloads folder, it can also be in your C drive. It does not matter. आपका जो relative hyperlink है वो हमेशा चलेगा, but by chance if you remove this file and keep it separately somewhere else, then your relative hyperlink will stop working. What is the use of macros in a spreadsheet? Macros makes things easier for you. जब आपके पास बहुत ज़्यादा steps हो और आपको वो steps बार बार repeat करने हो, so आप क्या कर सकते हो? आप अपने steps को record कर सकते हो. Then after recording your steps, you can name the steps and you can use it later. Now this can be an important question from eSpreadsheet. Define the following: subtotals, consolidation of data. Subtotals तब यूज होता है जब आपके पास डेटा है लाइक दिस। नाउ देर आर 8 सेल्स। फर्स्ट 4 का आप सब टोटल निकाल सकते हो, मे बी दिस रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ पेन्स, एंड आप लास्ट 4 का भी निकाल सकते हो, मे बी इट कैन रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ नोटबुक्स। सो सब टोटल 1 एंड सब टोटल 2। ऑल्सो नॉट ओनली एडिशन, आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम भी, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। कंसोलिडेशन ऑफ डेटा मीन्स आपके पास बहुत ज़्यादा शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द डेटा इन अ समराइज्ड फॉर्मेट इन अ मेन शीट। इसको हम लोग कंसोलिडेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक, you need to remember it cannot be null, it cannot be empty, no repetition, and it points to only one value or one record. ठीक है, whereas a foreign key means कि आपके एक टेबल में प्राइमरी की है, फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 है ये, इसमें आपकी प्राइमरी की कुछ है, इनसाइड टेबल 2 इफ यू हैव द सेम कॉलम, यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। What is referential integrity? When you hear this term, you need to remember कि referential integrity helps the database to maintain the accuracy and consistency of data. ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पे कुछ चेंज किया एंड दूसरी जगह पे वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या मे बी आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। आपके जो एरर्स हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। हाउ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वर्क्स, लेट्स से आपके पास एक पेरेंट टेबल है और एक चाइल्ड टेबल है, ठीक है। सो इसमें आपके पास कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, ओवर हियर ऑल्सो कुछ कॉलम्स एंड कुछ रिकॉर्ड्स। नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स। लेट्स से आई वांट टू ऐड अ न्यू रो इनसाइड अ चाइल्ड टेबल, बट ये तभी पॉसिबल है अगर इसका जो प्राइमरी की है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो। सो रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी एडेड अगर आपका यहाँ पर डिटेल्स वो प्रेजेंट ऑलरेडी नहीं है।
ऑल्सो रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द पेरेंट टेबल अगर यहाँ पर वो ऑलरेडी कनेक्टेड है. अगर आपने यहाँ से कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया देन यहाँ का जो चाइल्ड है वो ऑर्फन हो जाएगा. सो रिकॉर्ड deletion of records is also not allowed. How entry required and default value properties of a table field are different from each other. Entry required English language में if you understand, आपको जो एंट्री करना है वो नेसेसरी होता है. आप फील्ड को ब्लैंक नहीं रख सकते हो. It cannot be left blank. Whereas default value, for example, if the user did not enter anything, आपने वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं की तो जो RDBMS है वो ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू ऐड कर देगा. And this default value is same for the entire table, entire column. What is DBMS? Explain any two advantages of DBMS. Now this is a very long answer but you have already discussed a lot about this. जब आप database create करते हो, उसको maintain करते हो, उसमें records add करना, delete करना, change करना, and making the use of that database to collect records हो सकते हैं, files भी हो सकती हैं. So this entire system is known as a database management system. Advantages क्या होती है? आपके duplicates हट जाते हैं, आप data share कर सकते हो, multiple people can work on the same database together. Explain any two types of relationships that can be created between tables in RDBMS. So सिर्फ two types पूछा है but there are actually three types. 1-to-1 जहाँ पर एक column एक table is connected to another table only. 1-to-many जहाँ पर एक table का column multiple columns से connected हो सकता है. And many-to-many as the name suggests. You can refer to the DBMS video for this. Referential integrity and relationships are quite important for your exams. Next we go to SQL queries. The structure of table item नाम का एक table है is given below. Suggest suitable data type and size of each column. You will definitely get this question. So how to solve this? So आपको एक column name दिया हुआ है, आपको type पता करना है, maybe integer, maybe something else, and उसका size आपको guess करना है. So item number can be a integer value. So यहाँ पर integer आप कर सकते हो. Size can be from 1 to probably 100. It's up to you. There is no wrong answer. Maybe we can take size 5. Item name, we can take it as variable character. Why variable character? Because length कुछ भी रख सकते हो आप. इसमें आप integers add कर सकते हो. For example, product 1. Right? So variable character आपको ये सब help देता है. You can keep the size as 20. Price, again you can keep it as integer, or maybe you can also take it as decimal. Now decimal में the price can be probably 100 or it can also be 100.5. So we need to mention 3, maybe length of 3 and decimal places of 1. So 3,1, this is the size of decimal. Quantity, again we can keep it as integer and maybe the size is 2, which means 0 to 99. Consider the following table item जहाँ पर item number, item name, price and quantity given है. Display the total amount of each item. Okay, so हर एक item का total amount calculate करना है. So amount का formula क्या होता है? It is given price multiplied by quantity for each item. So price multiplied by quantity. So जब हम लोगों को चीज़ें display करनी होती हैं, what do we use? We use select. But now we need to create a calculation. हम लोग directly price नहीं लिख रहे हैं, directly quantity नहीं लिख रहे हैं. We need to find amount. So we say select price into quantity. Right? So price into quantity display होगा from the table name is item. So this is the first part. Display the details of items whose price is less than 50. So all the details we need to present. So select star from item. सारे items display होंगे, but the condition is where price is less than 50. So also remember
to always put semicolons, do not forget. DBMS, now this question is also important from the SQL queries view. To show all information about IT teachers. Now what we can say, सारी information for IT teachers, तो subject is computer. Okay, so instead of IT we use computer here. Select star from teachers, where, so now this is a condition where subject equals computer. Computer को हम लोग inverted commas में लिखने वाले हैं. Sorry for the bad handwriting, the space is kind of less here, but I hope you understand how to solve this question. To list the details of all teachers who are getting salary between 20,000 to 35,000, again we say select star from teachers where salary between 20,000 and 35,000. यहाँ पर हम लोगों ने inverted commas इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये integers है. To display the subject of all teachers whose age is more than 40 years, so select star from teachers where age is greater than 40 to display the list of all the teachers in alphabetical order. So select name from teachers, then we say order by ASC. Always remember to put semicolons everywhere. So this is a bit unclean, but I know you will be able to solve it after looking at the previous videos and the practice SQL questions. Another question like this, we are doing these questions because it is very important for you to know it, क्योंकि आपको ये marks almost free ही मिल रहा है. So display the details of all students of greenhouse. So we say select star from student where house equal to green, inverted commas and semicolon. To increase marks by 5 whose admission number is 1005. So over here we say alter table, sorry, not alter, here we are updating the value, right? So we need to use update statement. Update student, then we set admission number, sorry, not admission number, we set the marks, set marks plus 5, marks is equal to marks plus 5, where admission number is equal to 1005. To display the details of all students where marks are less than 80, again we say select star from student where marks are less than 80, display list of all students in descending order of marks. Also in the previous question, I think order by, यहाँ पर order by में आपको name लिखना पड़ेगा. Sorry for missing that out. Order by name and ASC. If you do not mention ASC, even then it's okay. Display the list of all students in descending order of marks. So we can say select star from student, order by marks, and then we say DESC and semicolon. So let's move on to web applications and security now. Write any 2 advantages of online shopping. You can shop from anywhere. You can make online payments. The shopping does not close. You get clothes or the items you ordered direct to your place. So this can be the answer. Very easy. List any 4 advantages associated with networking. What are the advantages? आप बहुत सारी चीज़ें share कर सकते हो, like data sharing, file sharing, almost the same. Hardware भी share कर सकते हो, internet access sharing like hotspot.
usage of network based applications like chatting, emails. Again, quite easy, nothing to remember as such. Differentiate between wired and wireless access. तो जहाँ पर आप फिजिकल केबल्स यूज़ करते हो, जहाँ पर आप वायर्स यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र डेटा और कनेक्ट डिवाइसेस, हम लोग उसको वायर्ड सेटअप बोलते हैं. वायरलेस डज नॉट यूज़ द वायर्स, जैसे आपका वाईफाई, वाईमैक्स, 5G, 4G and 3G. So these are the examples. Define the following hotspots. WiMAX uses microwaves, you can mention that, whereas Wi-Fi uses radio waves. So WiMAX पूरी cities के across use हो सकता है. Cities जहाँ पर probably बहुत ज़्यादा mountainous area है, जहाँ पर आपका connection अच्छा नहीं है, तो WiMAX के through earlier internet connectivity provide करवाई जाती थी. So the area is quite huge there, whereas Wi-Fi का area बहुत small होता है, जैसे only for a house or a building. इतने ही area में आपका Wi-Fi होता है. What do you understand by ISP? ISP का मतलब होता है Internet Service Provider. You should directly remember Airtel, Jio and Vodafone. They are all Internet Service Providers because they provide Internet to you, right? And they can provide Internet via modems, via dial-up. अभी आजकल ये use नहीं होता है, but we use fiber optic cables. What precautions must be taken to improve online security? So definitely antivirus, anti-spyware programs, anti-spam programs. Passwords should be very strong. So it should be always a combination of alphanumeric and special characters. Basically आप alphabets use कर रहे हो like ABC, small letters भी, numbers and also special characters. Secure transactions. Basically you need to use HTTPS. आपके वेब ब्राउज़र में एक ग्रीन कलर की की बनती है आपके एड्रेस बार पे, that is known as HTTPS or SSL protocol, and using encryption software or maybe using password for your laptops. Rahul and Amit are working on a school project assigned to them by their teacher. They have to send instant messages to each other and also do video conferencing after school hours. Okay, so 4 good instant messaging softwares, I don't need to tell you, you already know that, but they can be Skype, MS Teams, Zoom हो गया, Gmail हो गया. Apart from computers, list 4 hardwares for video conferencing. So right now, what are the things that I am using? So we need to use speakers. So since I cannot hear you, speakers are not present, but we need microphone, web camera, and speaker and headphone. So Rahul has purchased some stationery items from an online site. He has to make online payment. So online payment से related question है. 2 options that he can use to make the payment. हम लोगों ने देखा है UPI, credit card, debit card. So the difference between credit card and debit card is कि debit card आपके account से directly पैसे काट लेता है, whereas credit card is kind of a loan. You can pay using credit card now and you have to pay the bank later. Name 2 situations where online shopping can be useful. We have already discussed this. जब आप घर पे बैठे हो, आपको किसी को चीज़ें provide करनी है. Visiting a store is more expensive, you get discounts. Name 2 popular online transaction websites. So Amazon, Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato. Write the full form of COD. It is not Call of Duty. It is cash on delivery. Alright, so with this, we have completed all the important expected questions from the part B, subject specific skills, but it does not necessarily mean कि हम लोगों ने सारी चीज़ें cover की हैं. I had discussed some important topics at the beginning of the video, so please refer to those topics. If you found this video useful, you know what to do. Please comment under the video if you have any doubts. You can share it among your friends, and if you're already decided to take IP or CS in your class 11, please do not forget to subscribe. I'll also be coming with live sessions on the weekend, which is tomorrow and day after. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.